Now this right here is question number 169. Okay. Question number 169 says, what figure 10.1 shows a relay connected to a cell and a switch. When the switch S is closed, the iron core is magnetized. The left side of the core is a north pole and shown in figure 10.1. The iron armature is attracted to the core. Alright. On figure 10.1, mark the south pole of the iron core. आप अगर नॉर्थ पोल जो है वो लेफ्ट पर है तो साउथ पोल कहाँ जाएगा? राइट पे आ जाएगा. और दैट्स फेयरली सिंपल. द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ द आयरन आर्मेचर. जो नॉर्थ वाली साइड है यहाँ पे साउथ आ जाएगा, जो साउथ वाली साइड है वो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा. राइट. सो वी हैव दैट. And here the question says the cell is reversed. Explain what happens to the poles and to the armature. तो अगर आपका exactly आपके poles जो है वो opposite हो जाएंगे. So the cell is reversed. The poles of the what? The poles of the iron core change, and hence the poles of the armature also change. All right. अब आपको यहाँ पे exactly बताना हो कि change क्या है, I would suggest you do that. The change is going to be what state, what happens. तो हाँ, I would suggest कि यार आप ये लिखो कि यहाँ पे होगा क्या. सही है. So instead of saying कि यार आपके poles जो है वो reverse हो जाएंगे, I think you should write कि आपका north pole जो है वो कहाँ चला जाएगा. North pole was at the left of the iron core. अब वो कहाँ चला जाएगा? Right पे. So north. So the iron core now has north pole on the right and south pole on the left. Armature has south pole on the right and north pole on the left. जी बेटा. सही है जी. तो एक बार मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं. This is 169. So poles reverse, change positions, armature still attracted to the core. उसने लिखा हुआ है कि आर्मेचर के बारे में कुछ बताना है. State what happens to the pole and to the armature. Okay, yeah. तो खैर यहाँ पे yes. So ये भी गलत हो जाएगा. यहाँ पे भी सिर्फ एक मार्क मिलेगा. So करेक्ट. मैंने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा था. So yes, the poles on the iron core and the armature will reverse. And the armature will still be attracted to the core. So yeah, that would be the correct answer. The pole on iron and the armature will reverse. The poles on iron core and the armature will be reversed, and armature will still be attracted to the core. हाँ
क्योंकि दोनों दोनों आयरन के बने हुए ना. नहीं, आर्मेचर के भी चेंज होंगे ना, यही तो मैंने लिखा है. द पोल्स ऑफ द आयरन कोर एंड द आर्मेचर विल रिवर्स. दोनों के जो है वो चेंज होंगे, क्योंकि दोनों आयरन है ना, दोनों टेम्पररी मैग्नेट्स है, दोनों अपने हिसाब से जो है वो पोल्स चेंज कर लेंगे फॉरन. एक्सप्लेन व्हाई द कोर इज मेड ऑफ आयरन एंड नॉट स्टील. Magnetized easily, and then when the switch is turned off, it will demagnetize. So iron is a soft magnetic material, hence easily magnetized and demagnetized. So hence easily magnetized and demagnetized. सही है. Steel is a hard magnetic material. So steel is a hard magnetic material and will stay magnetized after the circuit is opened. मतलब सर्किट ओपन होने पे भी जो है वो क्या रहेगा, वो मैग्नेटाइज रहेगा. Does that make sense to everyone? ठीक है. So iron temporary magnet or easily magnetized, steel retains magnetized when current switch off, and armature released does not stay attracted, opens connection at AB. Same हो गया. सही है जी. All right. नहीं, सर्किट तो ओपन कर दिया ना हमने. Alright, so figure B 10.2 shows the relay connected in a circuit to a 12 volt battery. The bell is not ringing. ठीक है, the bell is currently not ringing. Alright. State the name of component X. Thermistor. Explain why the bell rings when the temperature of X rises. Resistance कम होगा तो Yep. So at lower resistance, more current passes through, causing the coil to attract the relay, जो कि close हो जाएगा, and that essentially completes the circuit of the bell, which starts ringing. सही है ना. तो क्योंकि यहाँ पे relay है तो आपको इस पूरे के साथ इसको connect करना पड़ेगा. So as temperature rises, resistance decreases, current increases, it will attract or it will close the relay switch. It will close the relay switch, completing the bell circuit. एंड फिर जाहिर सी बात है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी बेल जो है फिर रिंग होना शुरू हो जाएगी. दैट्स ऑब्वियस राइट, कि जब बेल का सर्किट कंप्लीट होगा द बेल इज गोइंग टू स्टार्ट टू रिंग.
When the resistance of X is 2000, the current in the coil is 1.5 milliamps. This causes the contacts in the relay to close. The resistance of the bell is 200. Calculate the potential difference across X. So when the resistance is 2000, the coil is 1.5. The current is 1.5. तो X के थ्रू अगर आपका resistance कितना है 2000. What's the current? All right. And we know already what the potential is. All right. So we can say, okay, all right. What's going to be the potential across the thermistor and what's going to be the potential across the coil or the magnet or the electromagnet. आपके पास रिले के साथ बराबर में यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है ना, तो इस कॉइल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल जा रहा है ये भी हमें फिगर आउट, ये भी पता होना चाहिए. सो खैर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स चाहिए यहाँ पे, तो दिस इज प्रीटी सिंपल. आई आर कर देंगे. आई जो है वो कितना है, दैट 0.0015 multiplied by R is 2000. So this right here I think is going to be 3 volts. सही है. The potential difference across the coil, so that's going to be 9 volts. Because out of the 12 अगर 3 volts जो है वो thermistor को मिल रहा है, तो 9 volts remaining जो है वो potential difference coil को मिलेगा. The current in the battery, total 12 है ना, तो 12 minus 3 is going to give me what? नहीं, एक मार्क का है. एक मार्क में सिर्फ आंसर डायरेक्टली लिखना है. द नेक्स्ट वन इज 2. द करंट इन द बैटरी. सो वी नो, सो हमें ये बात पता है बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 है. सो एसेंशियली व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यहाँ पर करंट जब आएगा तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक जो बेल जा रहा है और एक यहाँ पे जा रहा है. नाउ एट दिस पॉइंट वी नो कि एक्स के थ्रू 1.5 मिली एम्पेयर्स है, तो दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी 1.5 मिली एम्पेयर्स. ऑन द अदर हैंड रिले की कोई वो नहीं होती, रिले इज जस्ट अ स्विच, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता. सो दिस राइट हियर इज गोइंग टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ohms. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है द बेल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ohms. सो एसेंशियली द करंट थ्रू हियर कैन बी इजीली फिगर्ड आउट यूजिंग V इज इक्वल्स टू आई आर. तो V कितना होगा? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम. सो अगर आपके थर्मिस्टर एंड कॉइल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट्स है, तो बेल के अक्रॉस भी कितना होगा? सो वी कैन से कि 12 इज इक्वल्स टू I टाइम्स 200. I should be equals to 12 divided by 200. So ये 60 मिली एम्पेयर्स हो जाएगा. सही है. 0.06 is 60 मिली एम्पेयर्स. ऑलराइट. सो वी कैन से कि अच्छा ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये तो आप यहाँ पे शो करोगे वर्किंग कि यू आर गोइंग टू राइट दिस डाउन कि करंट अक्रॉस बेल लिख लेना बेहतर है. तो I should be equals to V upon R. So this right here is going to be 12 volts divided by 200. And that right there becomes 0.06. Huh? नहीं, bell is 200, sorry. Not 2000. The bell, the question says is 200 ohms. Huh? बिकॉज इट्स इन पैरेलल. पैरेलल में पोटेंशियल यहाँ पे जो एक्स के थ्रू चला गया वो तो एक्स के थ्रू चला गया. अब बेल का निकालेंगे ना कि बेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल. सो वी आर गोइंग टू से दैट करंट अक्रॉस द बेल इज 0.06 एम्पेयर्स. करंट अक्रॉस द थर्मिस्टर वाला पार्ट इज हाउ मच? दैट 0.0015. तो आपका टोटल करंट कितना हो जाएगा? 0.615 या 0.062 एम्पेयर्स. ठीक है. Then you've got component X is removed from the circuit and replaced by a different component Y. The bell now rings when the bright light shines. तो लाइट पे डिपेंड करने वाला क्या होता है?
It's light dependent resistor. So this right here is simply a light dependent resistor. And pretty much that's it. So ये आपकी पूरी जो है वो मई जून की सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई है. So all questions from 2003 May June to 2015 May Junes have been completed. सही है. तो what am I going to do? मैं ये वीडियो जो है वो आज पोस्ट कर दूंगा and what you are supposed to do is कि ट्यूसडे तक आप ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करेंगे. सही है. 154 हो गई है. 154 तक हो गया. बस ये 169 था जो आज मैं कर दूंगा. सही है. चले बच्चा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.